हेलो एवरीवन मु रंजीत फर्स्ट वीक जुलाई 2026 रो मिक्स करंट अफेयर माने नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर को एमसीक्यू माध्यम रे कवर करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सरस शक्ति वाज इन द न्यूज। इट इज ए फ्लैगशिप ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम? सरस शक्ति आंसर विल बी दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, DAYNRLM लॉन्च करा जिछि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। ए इनिशिएटिव कहा अंडर आसुची DAYNRLM द्वारा। यार मेन मोटो होची टू प्रमोट प्रीमियम प्रोडक्ट्स मेड बाय वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। विभिन्न जगह रे इंडिया रो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अछि तांकर प्रोडक्ट्स गुडी को प्रमोट करिबा। सरस शक्ति द इंटरऑपरेबल criminal justice system recently in the news. Which of the following is related? या भितर कहा रिलेटेड? ICJS करेक्ट आंसर विल बी नेशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो। नेशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो होम मिनिस्ट्री अंडर रे आसुची। सिक्योरली इंटीग्रेट्स 5 कोर पिलर्स। ए जो ICJS रहिला जो सिस्टम रहिला एथरे कोन करा जाईची डिलीवरी सिस्टम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को आउटे बेटर करिया पे पांचटा पिलर को इंटीग्रेट करा जाईची। सेगुडी कहला पुलिस, कोर्ट्स, प्रिजन, फोरेंसिक लैबोरेटरीज एंड प्रोसिक्यूशन। या द्वारा हबो कोन? इट facilitates the secure seamless transfer of data such as FIRs and charge sheets to eliminate redundant data entry and speed up trials. Recently, Sea Lips was launched at the Rashtriya Gramin Vikas Sammilan in क्यों जगह रे लॉन्च करा गला? आंसर अब न्यू दिल्ली रे। क्यों थीम अंडर रे? ग्रामोदय से राष्ट्रोदय, ग्रामोदय से राष्ट्रोदय। क्यों थी पाई? टू सपोर्ट द विजन ऑफ विकसित ग्राम विकसित भारत। ए जगह सी लिप्स रो फुल फॉर्म मन रखिबे सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर लिवलीहुड्स एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये होची गोटे कोन आप किंबा डिजिटल प्लेटफॉर्म कहि परिबा फॉर एम्पावरिंग वुमेन लेड SHG एंटरप्राइजेस अक्रॉस रूरल इंडिया। वुमेन जो जगह की लीड करूथबे SHG एंटरप्राइजेस गुडी को तांको पई एई सी लिप्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करा जाइछि। क्लियर? या विषय डिटेल्स आपण पढ़ी पारिबे जे कोनोसी भी आर्टिकल रो। Recently, Delhi ro monument adoption scheme was in the news. Under this scheme, adopted monuments are maintained by entities designated as। दिल्ली रे बहुत गुडे monuments अछि। से monuments गुडी को 5 वर्ष पई बहुत गुडे एंटिटी किंबा पर्सन ताको ऑर्गेनाइजेशन किंबा एनजीओ ताको अडॉप्ट करिवे एवं तार मेंटेनेंस एटसेट्रा सब से 5 वर्ष जाए रखिवे। तो सेमान को कौन कुआ जीवो? हेरिटेज एम्बेसडर, मॉन्यूमेंट मित्रस, कल्चर गार्डियंस, मॉन्यूमेंट कस्टोडियंस। आंसर विल बी मॉन्यूमेंट मित्रस। क्लियर? Recently, the National Narcotic Helpline Manas was in the news. It has been launched under which of the following organization? National Narcotics Helpline Manas न्यूज रे थिला केउ ऑर्गेनाइजेशन अंडर रे लॉन्च करा जाइथिला? आंसर विल बी यार आंसर मार्क करिया भूल जाइछि। बी हबो आंसर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। मानस रो फुल फॉर्म मन रखिबे मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। केबे लॉन्च हेतला? 2024 रे रिसेंटली आउथरे न्यूज रे थिला। एवं ए जगह रे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहा अंडर रे आसुची? होम मिनिस्ट्री। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY recently in the news. In which year the scheme was launched? क्यों वर्ष ए स्कीम लॉन्च करा जाइथिला? तो करेक्ट आंसर होची 2015 रे। यार मोटो होची हर खेत को पानी 2015 रे। टू एक्सपांड कल्टिवेटेड एरियाज विथ एश्योर्ड इरिगेशन एंड इंप्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी। PMKSY 2015। Recently, the I2SEA project, I2C project was in the news. It is a ये कौन? cross-border natural gas pipeline, submarine fiber optic cable system, high-speed railway corridor, satellite communication network. Answer will be submarine fiber optic cable system. Recently, Lightstorm, along with Microsoft,
Singtel and Tata Communication launched the India Southeast Asia यार फुल फॉर्म मन रखिबे I2SEA India Southeast Asia Submarine Cable System पाखापाखि 36 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर सबसी केबल कनेक्टिंग इंडियाज ईस्ट कोस्ट विथ सिंगापुर एंड मलेशिया दीटा कंट्री ना भी मन रखिबे इंडिया सहित कनेक्ट हम सिंगापुर एंड मलेशिया थ्रू केबल सिस्टम submarine cable system. The project is expected to be ready for service by Q4 of 2029. It is designed to support AI infrastructure, cloud services, and high-capacity digital connectivity between India and Southeast Asia. ये Southeast Asia रे दीटा country को specifically कुहा जाइए Singapore and Malaysia. Recently, mission Agaman was in the news. It is the maiden launch mission of which of the following launch vehicle? Mission Agaman. It is related to Vikram 1. It is related to Vikram 1. यार capacity payload carry करिवार 350 kg up to 350 kg to low Earth orbit. Mission Agaman is the maiden orbital launch mission of the Vikram 1 rocket. Vikram 1 rocket. डेवलप करा जाइए हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस इट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट ऑर्बिटल क्लास लॉन्च व्हीकल इंडिया रो फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट ऑर्बिटल क्लास लॉन्च व्हीकल मन रखिबे ये कोठू फ्लाइट टेस्ट करा जिवो को जगह स्टार्ट करा जिवो आंध्र प्रदेश रो श्रीहरिकोटा Recently, the Sustainable Development Report 2016 was released. India secured which of the following ranks in the 2026 UN Sustainable Development Goal Index? India rank kete? Answer will be 94th out of 167 country. 94 out of 167 country. Release का द्वारा करा जाउची ताकू भी मने रखिबे released by UN Sustainable Development Solution Network द्वारा. एथरे टॉप के करची फिनलैंड टॉप करिची तापरे आसी जाउची स्वीडन एंड डेनमार्क सबटु लास्ट जदी देखिबा चार्ट अछि देन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सुदान. Recently, Tamil Nadu announced the deployment of India's first 3D printed artificial reef under which of the following scheme? Reef, picture देखि पारुछंती, reef, coral reef, तथा पे 3D printed structure समुद्र रे रखा जीवो जो द्वारा कि से जगह coral reef रो डेवलपमेंट करा जाय परिबो जोटा कि धीरे धीरे कमी बारे लागि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. आंसर विल बी एथरे भी आंसर देई निमो एटा हबो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. द प्रोजेक्ट एम्स टू रिस्टोर मरीन हैबिटेट्स एंड बूस्ट कोस्टल बायोडायवर्सिटी. लोकेशन एग्जैक्टली क्यों जा रहे? डिप्लॉयड अबाउट 2 nautical miles offshore in the coastal water of the Ramanathapuram Rameswaram coast, Tamil Nadu. Recently, the trade receivables discounting system TREDS was in the news. It is primarily designed to the TREDS trade receivable discounting system ये कौन पाई डिजाइन हेची? It is primarily designed to facilitate financing of a trade receivable of MSMEs. MSME related TREDS. Clear? एजर ऑप्शन आपन को प्रॉब्लम रे पके पारे. देखंतु ट्रेड्स को बुझिबा जदी प्रथम ऑप्शन देजी प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स टू MSME, facilitate financing of trade receivable of MSME, promote export by large manufacturing companies, offer venture capital funding to startups. देखंतु गोटे हला MSME ये कौन कला ना तार प्रोडक्ट बाहर कला प्रोडक्ट दे देला गोटे डिस्ट्रीब्यूटर को किंबा गोटे बड़ कंपनी को दे देला. कंपनी कौन कहला ना मु तते 100 दिन पर टंका देबी ए प्रोडक्ट रो जहा भी वैल्यू थो 100 दिन पर देबी बोली कहला. तापरे ए 100 दिन पर्यंत MSME रन करिया पई ताकू टंका दरकार. जदि छोटो MSME अछि ताले ता प्रोडक्ट रो वैल्यू ताकू इंस्टेंटली मिलले से हरी बेटर वे रे काम करि परिबो. तो ए 100 दिन पई जो समय से मागिला कंपनी सेतिकी लेट न करिकी ए जो प्लेटफॉर्म रहिला TREDS से कौन करिवो ना MSME पर्टिकुलर MSME को जो ए प्रोडक्ट ता प्रोडक्ट रो टंका दे दबो.
हेल्प करदब बुझीगला आ ट्रेड्स काम रहिबो से कंपनी रो पैसा नबार काम बुझीगला या द्वारा जो एमएसएमई डिफिकल्टीज फेस करछंती सेटा इज हे जिवो तो फैसिलिटेट फाइनेंसिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ एमएसएमई बुझीगला जिंसटा कोन ये सब एते डिटेल दरकार नहीं बट डोंट नो को एग्जाम रे ऑप्शन ही कंफ्यूजिंग पके दबो क्लियर Recently, the 2026 World Hydropower Outlook was in the news. The report is published by which of the following organization? World Hydropower Outlook. Correct answer will be International Hydropower Association. केतरा डाटा अछि या तो रिपोर्ट आसीछि बट ता भीतर किछटा पिक करा जैतवा डाटा जेमिति कि ग्लोबल हाइड्रोपावर कैपेसिटी रीच करिछि 1469 गीगावाट इन 2025 ग्लोबल पम्प्ड स्टोरेज कैपेसिटी सरपास करिछि 200 गीगावाट चाइना रे सबुठु अधिक हाइड्रो पावर कैपेसिटी आड होती 2025 रे अराउंड वर्ल्ड रो 40% चाइना ही आड करिछि इंडिया कथा जदि देखिबा एडेड ओवर 4 गीगावाट ऑफ न्यू हाइड्रो पावर कैपेसिटी इन 2025 केते 4 गीगावाट रो सरपासिंग रशिया टू बिकम द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री फॉर टोटल इंस्टॉल हाइड्रो पावर कैपेसिटी पोटेंशियल होची किंतु इंडिया रो 288 गीगावाट रो बट ऐड करिछि केते 4 गीगावाट ठीक अछि क्लियर रिपोर्ट बहुत डिटेल्स अछि आपण जे कोनसे आर्टिकल रिगार्डिंग पढि परिबे रिसेंटली पशुजन्य युद्ध अभ्यास was in the news it is conducted to पशुजन्य युद्ध अभ्यास is related to test preparedness for animal disease outbreak हेले ता पई कोन केन कोन करियार अछि ताकु नै के अभ्यास Recently, the underwater fiber optic sensing system UFOSS was in the news. It is primarily designed to underwater fiber optic sensing system. It is primarily designed to detect and track underwater submarines. Clear? Recently, the United Nations guidelines for consumer protection were in the news. They serve as UN guideline for consumer protection UNGCP. को काम ए नॉन बाइंडिंग ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज एंड पॉलिसीज बाकी ऑप्शन हबनी ए लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन कंज्यूमर राइट्स ए यूएन कन्वेंशन ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड ए ग्लोबल एग्रीमेंट रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स आंसर विल बी ए नॉन बाइंडिंग ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज एंड पॉलिसीज रिसेंटली Pandavani was in the news following the demise of renowned folk artist Tijan Bai. Pandavani is a traditional folk theatre and ballad singing style associated with which of the following states? here दी तीनटा इंफॉर्मेशन दिया गला Pandavani theatre Tijan Bai related to कौन पिक्चर देखि पारछंती बलाड सिंगिंग स्टाइल क्यों स्टेट सहित एसोसिएटेड आंसर हम छत्तीसगढ़ मन रखि वेरी वेरी इंपोर्टेंट Recently, which of the following states signed an agreement to resolve the long pending payment dispute related to the Sardar Sarovar project? Sardar Sarovar project related states गुडी को होचंती गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र Who was appointed as the new executive director of the Reserve Bank of India 1st July? Answer about Ravi Shankar. Which state launched the second phase of the School Chalo Abhiyan to achieve 100% school enrollment for the financial year 26-27 academic session? 100% school enrollment by School Chalo Abhiyan second phase. Kya launch kala? The answer will be Uttar Pradesh. Who was honored with the 2026 USISPF Leadership Award for strengthening India-US economic ties and transforming India's telecommunication sector? USISPF Leadership Award kaha ko mila? Sunil Bharti Mittal, founder and chairman of Bharti Enterprises, received the 2026 USISPF Leadership Award at the 9 US-India Strategic Partnership Forum.
जोटा कि वाशिंगटन डीसी रे चली इंडिया यूएस मध्य रिलेशन को लेकिन स्ट्रेंथन करिवारे इंडिया टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन आनिबारे सब को लेकिन रिकॉग्नाइज करा जायछि तांको ऑनर करा जायछि Which Indian private aerospace company signed an MOU with a Finnish firm ICI to build, launch and operate synthetic aperture radar Earth observation system for India? यार करेक्ट आंसर हम अग्निकुल यार करेक्ट आंसर हम अग्निकुल आपण जून मासर करेंट अफेयर जदि देखिबे सेथिरे एई सेम फिनिश रो आईएसआई कहा सहित एमओयू साइन करछि ध्रुवा ये भी होछि इंडिया बेस क्लियर कंफ्यूज हेबे नहीं Which institution signed an MOU with the Ministry of Corporate Affairs to implement the Corporate Mitra scheme aimed at supporting MSME with regulatory compliance? Answer will be IIT Madras. Answer will be IIT Madras. Where was the 12th India-Malaysia Subcommittee meeting on military cooperation conducted 1st July 2026? India-Malaysia Subcommittee meeting, New Delhi. Which state launched the DG Rover Special Land Survey campaign to modernize land demarcation using GNSS technology? DG Rover Special Land Survey campaign क्यों स्टेट लॉन्च करथिला उत्तर प्रदेश GNSS रो फुल फॉर्म होची ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डिमार्केशन टिके बेटर वे रे हेई परिबो Which countries signed an MOU with India to enhance cooperation in water resources and sustainable management during the Saudi Water Week? Saudi mane obviously answer of Saudi Arabia. Which state is home to the Borjoli site that was notified as a biodiversity heritage site to conserve wild rice genetic resources? Wild rice genetic resources. Borjoli site obviously नारू जना पड़ जाउची आंसर हम कौन आसाम स्क्रीनशॉट नहीं जाइथवा एटा मते पुनी आउ थरे ऑप्शन गुडी सेट करिया पड़िबो आसाम ठीक अछि आम ओडिसा रे केतेटा बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट अछि कमेंट करके जणेबे बेटर हो जदि चारटा सब जगार ना कहि देबे क्वेश्चन आसुची ता ऊपर बेस करके हना नहीं Who won the Austrian Formula 1 Grand Prix held at the Red Bull Ring on 28 June 2026? Answer will be Austrian Formula 1 Grand Prix. George Russell जीति. When did the Reserve Bank of India implemented the revamped Integrated Ombudsman Scheme RBIOS 2026? Answer अब जुलाई 1 रु implement होची केवल गोटे लाइन मन रखंतु one nation one ombudsman one nation वन ombudsman आपण बीसीसीआई रे देखिबे ombudsman थांती विभिन्न बैंक रे देखिबे ombudsman थांती Which Aadhaar details can residents now update free of charge through the official Aadhaar app? मोबाइल नंबर चेंज करि परिबे ना ईमेल ना डेट ऑफ बर्थ ना बायोमेट्रिक डाटा ऑब्वियसली आंसर होबो ईमेल चेंज करि परिबे फ्री ऑफ कॉस्ट What is the toll free जार चेंज करे अछि चेंज कर देबे What is the toll-free number of 24/7 Women Helpline launched by the National Commission for Women? Answer will be 14490. 14490 to provide immediate support, complaint registration, psychological counseling and guidance for women facing violence, harassment, workplace exploitation and other forms of abuse. 18 वर्ष जहां अधिक से माने ही कंप्लेन करि परिबे यही नंबर रे कांटेक्ट करिकी ताठू कम जो माने से माने कंप्लेन करि परिबे नहीं Which Indian states Jalbhara Sandesh, Janais Manohara and Balagar's traditional wooden boats recently received geographical indication tags? Answer will be West Bengal. Answer will be West Bengal. Who became India's youngest international cricketer by making his debut at the age of 15 years and 99 days? कहला इंडिया यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर किए हिचंती वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट आमे जानिथिले सचिन तेंदुलकर बट तांकर 16 इयर्स एंड 205 डेज हितला 1989 रे
कहा अगेंस्ट ये डेब्यू तांकर करथिले इंग्लैंड अगेंस्ट रे हु assumed charge as the chairman and managing director of Hindustan Copper Limited on July 1st 2026 आंसर होबो अनुपम मिश्रा ऑफलाइन एग्जाम आपण जो माने भी ओडब्ल्यूएस रे एग्जाम दोछन्ते ऑफलाइन ता पई पर्टिकुलर क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपोर्टेंट नुह किंतु ऑनलाइन एग्जाम जदी दोछन्ते जोटा कि कंप्यूटर बेस ता पई ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट Which country partnered with India to launch the first forum for the promotion of export in Bamako? एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करा जाउछि बामाको केउ जगह सहित लिंक माली वेस्ट अफ्रीकान कंट्री होछि माली कैपिटल होछि तार बामाको एवं एमानकर बायलैटरल ट्रेड इंडिया एवं माली मध्य रे यूएस डॉलर 326 मिलियन देखियो को मिलला 2025-26 रे क्लियर नेक्स्ट हु अचीव द वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन द मेंस शॉट पुट F57 category on July 2 2026 जगह F57 लिखिबार रीजन होची से गोटे कैटेगरी प्लस पारा गेम्स को बुझौची तार करेक्ट आंसर होची होकातो होतो जे तेमा मने रखिबे व्हिच कंटिनेंट कोन पेना पर्सन ही इंपोर्टेंट तांको अर्जुन अवार्ड भी मिली छी Which continent will benefit from the WHO approved first molecular diagnostic test for the Bundibugyo Ebola virus to accelerate outbreak response? So obviously Africa was correct answer. Basically, bhabiwara nahi. Next, who was appointed as the new chairman of the Central Board of Secondary Education? A question important रहेगा. CBSE रा new chairman का को appoint करा जाइए. Answer will be लोखंडे प्रशांत सीताराम. In which Indian state was the world's oldest accurately dated banyan tree scientifically identified? Answer will be Bihar. कहा जाउची around 700 वर्ष पुराना. केउ टीम जितला आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंग्लैंड को हरे की लॉर्ड्स कोटी अछि इंग्लैंड रे ऑस्ट्रेलिया जितला मन रखिते ऑस्ट्रेलिया रो होची 7th आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप टाइटल व्हाट इज याकु ने की सेपरेट वीडियो करिया कथा बट इंडिया ए जगह रे किछि जितिनी सेत पई व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द इंटरनेशनल बुकर प्राइज आफ्टर इट्स रीनेमिंग इन 2026 वेरी वेरी इंपोर्टेंट न्यू नेम कोन रखाला बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज आउ तार ना इंटरनेशनल बुकर प्राइज केवल रहबनी बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज हबो क्लियर 2027 रो दिया जीवो एवं प्राइज मनी को मध्य डबल करा जायछि आगरो दिला 50,000 पाउंड्स एबे करा जायछि 1 लाख पाउंड्स क्लियर नेक्स्ट which Indian naval sail training ship represented India at the US International Naval Review 250 and Sail Forth 250 celebration in New York? The India को represent करथिला INS Sudarsani. Which country chaired the 9th session of UNCTAD's Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva from July 6 to 8, 2026? UNCTAD Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy. क्यों कंट्री चेयरमैनशिप करथिला इंडिया मन रखितबे वेरी इंपोर्टेंट. What was India's rank in the Global Passport Index 2026? Very important a question आसीबो. Henley Passport Index that is different, Global Passport Index that is different. India रा rank हो जेतरे 125 out of 197 countries. In which industrial hub is the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility located as part of India's growing semiconductor ecosystem? क्यों जगह रे CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility अच्छी correct answer हवा सानंद गुजरात. Which Brazilian footballer announced his retirement from international football after Brazil's FIFA World Cup 2026 round of 16 exist? आंसर मने रखिबे नेमार. एमती क्वेश्चन आसी पारे रिटायरमेंट को नेकी नुह नेमार केउ देश को रिप्रेजेंट करनती बा केउ देश रो खेलंती क्लियर ठीक अछि. मेसी को देश रो खेलंती रोनाल्डो केउ देश रो खेलंती एमती क्वेश्चन आसी पारे FIFA वर्ल्ड कप पई
Which state is home to India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex? India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex केउ स्टेट रे? राजस्थान मन रखिबे. Which state is constructing India's first air-filled rubber dams using South Korean technology? A question आसी जाई पारे. India's first air-filled rubber dams using South Korean technology. Answer will be Gujarat. Answer will be Gujarat. Two projects are being developed on the Heran River in Chota Udaipur district and Ambika River in Tapi district. Dita river ko thaku aji Heran and Ambika. Clear? Next. Who has been appointed as India's new ambassador to North Korea? North Korea को नुआ ambassador किए छथि. North Korea को आम इंडिया रो ambassador मु फर्स्ट टाइम सुनली माने मु आगुरे ते न्यूज रे सुनिनी. आंसर हो संजीव जैन. Answer will be Sanjeev Jain. Which state's first GI recognized fruit is the Sirsa Kino? Sirsa Kino. क्यों स्टेट रो फर्स्ट GI recognized fruit? Answer will be Haryana. Which state approved the 313 crore PM Cha Shramik Prosahan Yojana package for tea garden workers? Assam, Tripura, Sikkim, West Bengal. Answer will be West Bengal mane rakhithibe. PM Cha Shramik Prosahan Yojana package. Who was officially declared the winner of Peru's presidential runoff election? Peru ro presidential runoff election रे किए जीतिले? Kiko Fujimori. Kiko Fujimori. Which country conferred its highest civilian honor, Bintang Adipurna, on Prime Minister Narendra Modi? Answer will be Indonesia. Answer will be Indonesia. PM Narendra Modi Jakarta visit रे जाइथिले एवं तार विषय आगुटे आगु देखिबा. Which state opened the online application window for the post-matric scholarship scheme for scheduled caste students for the year 2026-27? Answer will be Punjab. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम कहार? एससी स्टूडेंट मानक पई पंजाब. Where did India host the BRICS heads of anti-drug agencies meeting in 2026? Anti-drug agency रो मीटिंग ब्रिक्स रो आंसर अब गुवाहाटी. देखो ब्रिक्स अंडर रे बहुत गुडी मीटिंग होची. क्लाइमेट को नेकी मीटिंग हेतिला, जो डिजास्टर मैनेजमेंट को नेकी पुरी रे, टेक्नोलोजी स्पेस साइंटिफिक टेक्नोलोजी को नेकी कोठी हेतला बेंगलुरु रे जदि भूल न को थाए. सिमिलरली एंटी ड्रग एजेंसी मीटिंग कोठी हला गुवाहाटी रे. तो ये सब स्पेसिफिकली आपन को मन रखिया को पड़िबो स्पेसिफिक करिकि. हाउ मेनी स्टेट्स साइंड द नर्मदा प्रोजेक्ट पेमेंट पैक्ट टू रिजॉल्व द लॉन्ग स्टैंडिंग कॉस्ट शेयरिंग डिस्प्यूट? नर्मदा प्रोजेक्ट 4. मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र. मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान and Maharashtra. Which country signed 14 strategic agreement with India including deals to procure BrahMos and Astra missile system? एबे टिके सम पूर्व आमे पढुतिले पीएम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया विजिट रे जाइतले एवं इंडोनेशिया रो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पीएम मोदी को दिया जाइतला एवं ता रिलेटेड आ गोटे क्वेश्चन सेपरेटली. BrahMos and Astra missile system. What is the name of India's first dedicated digital learning platform for tribal arts, culture, language, and traditional knowledge launched by the Ministry of Tribal Affairs? India's first dedicated digital learning platform. Answer will be TribeX. TribeX. Where will South Asia's largest private sector integrated missile manufacturing plant be established by Adani Defense and Aerospace? साउथ एशिया रो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इंटीग्रेटेड मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जगह रहबा जाउची शिवपुरी, मध्य प्रदेश. Which country is scheduled to launch its fourth next generation medium size earth observation satellite via a SpaceX Falcon 9 rocket? क्यों कंट्री तार फोर्थ नेक्स्ट जनरेशन मीडियम साइज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करिया जाउची थ्रू SpaceX Falcon 9 rocket? South Korea. Which state introduced millet based chikki into the Doka Sithama midday meal scheme to improve student nutrition? चारिटा जाक साउथ इंडियन स्टेट रो ना लिखा जाइछि.
तो भलसे मन रखा पड़ो एमती नुह जे एग्जामिनर केवल आंध्र प्रदेश को लिखि ऑप्शन रे बाकी सब नॉर्थ ईस्टर्न किंबा नॉर्थ स्टेट गुड़िक ना दे देथिबो सबू साउथ इंडियन स्टेट भी से दे पारिबो तो एक्जाक्टली मन रखिबे डोका सीथामा मिड डे मील जो थरे कि मिलेट बेस्ड चिकी प्रोवाइड करा जोची इंट्रोड्यूस करा जीची who is leading the Indian delegation at the inaugural Global Dialogue on AI Governance in Geneva, Switzerland. तो इंडिया को लीड किए करछन्ती कीर्ति वर्धन सिंह जे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट अछन्ती क्लियर Which city will host the Commonwealth Games 2026 where the Indian contingent will wear sustainable jute viscose blended apparel से apparel से कोट रो फोटो आनिया को बोधे भूली गली सेटा सस्टेनेबल ज्यूट विस्कस ब्लेंडेड apparel माने कौन कहबा एग्जैक्ट परफेक्ट वर्ड होची बायोडिग्रेडेबल apparel सेटा ठीक अछि तो क्यों जगह रे हबा को जाउची कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 स्कॉटलैंड ग्लासगो रे हबा को जाउची 23 जुलाई रो 2 अगस्त पर्यंत which state's natural history museum was designated as India's 21st designated repository under the Biological Diversity Act 2002 Biological Diversity Act 2002 रे आस्थिला तो केउ स्टेट रो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम डेजिग्नेट करा दिछि इंडिया रो 21st डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी आंसर विल बी मिजोरम रे अछि क्लियर ठीक अछि नेक्स्ट Which major port became India's second port with an 18-meter operational draft after completing the capital dredging phase 6 project? India's second port है 18-meter operational draft after completing the capital dredging phase 6 project. Answer haba Kamarajar port after Visakhapatnam. तो Visakhapatnam first port, second होची कमराजार जिनस कौन ये है पोर्ट रो माने करो जो जगह रे कि ट्रांसपोर्ट करा जाए शिप को शिप पोर्ट ए जगह रे को शिप आसी परिबो जहार डेप्थ अधिक रहिबो जो पोर्ट साइट रे डेप्थ अधिक रहिबो से जगह को सेति बड़ शिप आसी परिबो माने नहीं तो ये सब को आहरी इजी करिया पई 18 मीटर ऑपरेशनल ड्राफ्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द कैपिटल ड्रेजिंग फेज 6 प्रोजेक्ट को हाजैछि जोते कि लार्ज स्केल रे बड़ बड़ कार्गो हैंडलिंग पॉसिबल हबो शिप जेतला पाखु आस परिबो ठीक अछि एतिकी थिला 1 जुलाई 2026 इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर वीडियो कंप्लीट देखिथारो धन्यवाद बेस्ट ऑफ लक टू ऑल